morning class. Today we'll be starting with our unit number 6 and the unit number 6 is all about the reverse logistic. So we'll be discussing the role of data analytics in reverse logistic. We'll also be doing a comparative study with the traditional and e-commerce firms in relation to the reverse logistic, how they have managed and how they are managing the reverse logistic. Okay, so let's get started. Firstly, let us understand the meaning of the reverse logistic. The reverse logistic, it basically refers to the process of managing the flow of goods from like the final consumer or the final destination back to the manufacturer or the destination. Okay. So अल्टीमेट जो कंज्यूमर्स को गुड रिसीव हुआ था वहां से वापसी गुड जो कहाँ आ रहा है मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है तो ये जो कंज्यूमर्स के पास गया था वो वापस जब मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है तो रीजंस क्या हो सकते हैं रीजन में भी रिटर्न है रिपेयर है या फिर उसको रिसाइकल करना पड़ेगा या फिर दैट नीड्स टू बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ है ना इन सारे रीजंस की वजह से गुड जो है अल्टीमेट कस्टमर से कहाँ आ रहा है मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है ओके तो इस ये कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर तक लाने के लिए भी तो हमें लॉजिस्टिक लगेगा और इसी को तो क्या कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक ओके इस रिवर्स लॉजिस्टिक में भी प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो कंट्रोल वेरिएबल्स लगाते हैं है ना जैसे ट्रांसपोर्टेशन कौन सा लगाना है व्हाट विल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूटिंग जो हमने नॉर्मल लॉजिस्टिक में पढ़ा था वो सब कुछ अप्लाई हो जाता है इवन रिवर्स लॉजिस्टिक में भी क्योंकि यहाँ भी तो सप्लाई चेन आपको करना ही होगा यहाँ भी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल रूटिंग शॉर्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आपको करना पड़ेगा है ना कि कौन से गुड्स मतलब शॉर्ट आउट करना पड़ेगा किसको आपको रिसाइकल करना है किसको रिफर्बिश करना है ना तो ये सब कुछ जो होता है ये सारा रिवर्स लॉजिस्टिक में इन सब को यूज करना होगा ओके तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि हाउ द ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स companies they were managing their reverse logistic so reverse logistic actually nowadays it has become a crucial thing for these e-commerce firms because e-commerce firms जब से आ गए हैं ना it is easier uh, and also convenient to return the goods okay अगर आपको गुड में थोड़ा भी डिफेक्ट या कुछ आपको इश्यू लगता है तो यू कैन जस्ट इजीली बिकॉज द विंडो इज सो एक्सेसिबल एंड सो इजी दैट without paying any penalty you may return and because of this reason the the return has increased a lot and therefore the companies has to bear a huge cost and has to use analytics and supply chain to manage this reverse logistic okay so now we are discussing कि traditional firms जो थे like the retail normal जो आपके stores वगैरह होते हैं retail chain जो चलते हैं they have the large department and how they are let us understand how they are managing their returns okay तो उनका क्या होता है कि you have to return the good properly to that store है ना तो फिर वहां आप स्टोर पे रिटर्न करते हैं and then all the जैसे like for example if I'm taking the example of the Reliance Trend then if you return there then what happens कि they collect all the return goods from all the multiple physical store locations then they process the returned items okay and then decide whether to restore एक बारी वो सारे चेन से जहां जहां जैसे आपका नॉर्थ दिल्ली में साउथ दिल्ली में है आपका वेस्ट दिल्ली में है ना हर जगह से वो हर एक स्टोर से वो कलेक्ट होता है एक प्रॉपर लोकेशन पर आता है एंड देन दे प्रोसेस इट एंड देन दे सेगमेंट एंड शॉर्ट दैट कि उस स्टॉक का क्या करना है रिफर्बिश करना है डिस्पोज करना है या क्या करना है ना तो अगर if there is inefficiency in this reverse logistic you can just imagine कि सबसे पहले तो आपका वो गुड बेचे आपने जो बेचा उसका लॉस हुआ ठीक है दैट बियर्स कॉस्ट ओके फिर उसके बाद आपकी इन्वेंट्री भी एक्सेस हो जाएगी फिर उसके बाद पुअर कस्टमर एक्सपीरियंसेस भी हो रहा है प्लस वो साथ में सारी जगह से गुड्स इकट्ठा करना एंड ऑल दीज आल्सो रिक्वायर द मैनेजमेंट एंड टाइम ओके देन उसके बाद कब वो जो सारे गुड्स इकट्ठे हो जाएंगे देन they do the sorting and all. So all these take a lot of time and thus they bear a huge loss because the
product may be out of fashion, or right. So this is the problem with the traditional retailers. Okay. Now, if we discuss about the e-commerce company, like for example, let us take the example of Amazon. Then you know Amazon, it is the largest e-commerce platform globally. So Amazon, it also faces high return rates. Okay, as I have discussed that these e-commerce companies, they are facing high return rate as compared to the normal traditional brick and mortar companies. Reason being because here the reason is given, like the online shopping convenience is there, the free return policies are there, inability to, like, you cannot physically touch the good, and that may also be the reason that you have to return the goods sometimes, है ना? So all these are the reasons of the high return rate for these e-commerce companies. And in this scenario, they need to have an effective reverse logistic. They need to have effective reverse logistic, and this is possible only when the data analytics is used in managing these returns, so that the inventory is also optimized and the customer is also satisfied. Okay, so here we'll be discussing the how to optimize the return centers. Okay, so those return center can be optimized in order to reduce the transportation cost and to shorten the processing time, है ना? वो जो शॉर्ट करने में या जो सेगमेंट करने में जो टाइम लग रहा है कि इस गुड को रिफर्बिश करना है या क्या करना है, ये सब जो टाइम लग रहा है इसको कम करने की कोशिश करना है। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कम करने की कोशिश करना है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना है, तो वी नीड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न सेंटर, है ना? वी नीड टू बिल्ड अप अ रिटर्न सेंटर वेयर थ्रू द डेटा एनालिटिक्स वी कैन स्ट्रेटेजिकली reduce the transportation cost and shorten the processing time and also satisfy the customers. So okay, so Walmart, we have been taking the example of Walmart when we are talking about the uh, this इन्वेंट्री, द बेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना? तो वॉलमार्ट इट स्ट्रेटेजिकली लोकेट्स इट्स रिटर्न सेंटर, तो रिटर्न सेंटर भी कहाँ होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वॉलमार्ट इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। वॉलमार्ट में ऐसे ऐसे जगह रिटर्न सेंटर्स रखा है जिससे कि इट शुड बी एट द प्रॉक्सिमिटी टू द मतलब कस्टमर्स, कि अगर वो गुड्स रिटर्न करे तो फटाफट रिटर्न भी हो जाए और उसके बाद जो रिप्लेसमेंट है वो भी फटाफट चला जाए, है ना? So it should be near to the major transportation hub to minimize the transit time and also streamline the processing. Okay. Next, there should be a proper plan for all the reverse distribution. Okay. So we can use analytics that can help develop efficient reverse distribution plans, है ना? तो distribute कैसे करना उसकी भी proper planning होना चाहिए, ठीक है? तो we can use best method for processing returned item, identifying the opportunities for refurbishment, है ना? कि इसको कैसे वापस सेल हो जाए कुछ डिस्काउंट पे कुछ ऐसे, है ना? So these should be identified, or recycling. So optimum transportation routes should be identified. And here I have just given the case study, example of the case study of IKEA. So IKEA आपको पता है वो predictive analytics use करती है. Predictive analytics, if you remember, we have discussed कि predictive analytics का मतलब क्या है? It is used to forecast the demand, है ना? Demand forecasting में help करता है predictive analytics. IKEA जो है ना वो अपने रिवर्स लॉजिस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अपना ये करने के लिए प्लान करने के लिए दे यूज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की कौन कौन से जगह जहां से रिटर्न आ सकता है, दे यूज द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स देयर, ओके, टू फोरकास्ट द रिटर्न एंड एडजस्ट द स्टाफिंग लेवल अकॉर्डिंगली टू हैंडल द पीक रिटर्न्स. सी ओके, द नेक्स्ट इज व्हीकल रूटिंग फॉर रिटर्न कलेक्शन, मींस जो रिटर्न जो है रिटर्न जो आपका आ रहा है उनको कलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर व्हीकल रूटिंग करनी चाहिए. एंड हियर आल्सो वी शुड यूज and take the advantage of the data analytics to optimize the vehicle routing for the return collection, which can reduce the transportation cost, which can minimize the fuel consumption
and also improve the environmental sustainability, है ना? तो हमें ऐसा रूट यूज करना है जिससे फ्यूल भी बचे, environment भी सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए। जैसा हमने डिस्कस किया था कि यूपीएस जो कंपनी यूएस कंपनी है, इट यूजेस द advanced routing algorithm, real time tracking to optimize the reverse logistic. We have Indian companies, this Flipkart and all, they are also using this vehicle routing for return collection softwares, and they are using it in a very effective way, efficient way. You can just see कि कितनी जल्दी the goods, the order which you cancel, they are just returned, and sorry, not cancelled, the whichever order you are returning for, they are just returned within the day, and you are given with the new uh, uh, your delivery, right? So they are also using this very effectively. Okay, so the return center should be optimized, the distribution plan should be optimized, and the vehicle routing should be considered. Okay, so this is for this video. We'll be meeting next, discussing the reverse logistic in traditional forms. Thank you so much. Bye bye.